G. So let's start. So I was here. So this portion from capital A to capital Z will generate, and there is no star or plus over it, which means that this is only for a single string. It will generate only a single string, and that string will contain only one letter. That would be A, that would be B, that would be C, or whatever up to Z. So this is only representing that one capital letter can be produced, and hence this string P can be produced from this part. And here from small a to small z, and you have a star over it, which means that all possible strings of a and z, either in a single form or in a multi letter string. For example, single A, single Z can be produced, A, B can be produced, A, B, C can be produced. So this is what I want to say. So ALO can be produced because ALO is a string, possible string in this pattern, in this regular expression. So a string of other letters, possibly empty due to this star. But okay, epsilon is also the string, but 0 and more. So ALO can be produced from here, from this part. That's good. Next is you have a parenthetical expression. Here you have a parenthesis starting and then ending here, and you have a star over all this expression. But first, this is only square brackets with empty string, or you can say with space. So this, from this part, you can generate this space between Palo and Alto. And from this part, you can, again, there is no star over it. The star here we have, but here on this unit, on this part, you don't have any star. So again, from this unit, you can only produce one capital letter like this, A. So space can be produced, and then capital letter, one capital letter or single capital letter can be produced, and afterward, and these all strings are in concatenation. And then you can produce all possible combinations of A, small a to Z, which means LTO. So space, then capital A, and then LTO. So this string, space and alto, can be produced from here. And this only one string cannot be, we can generate only this one string, space alto. And if there is another string after this alto with space balto, that can also be produced from this portion. And if we have another string after that balto with space calto or space malta or space even my name Kesser, that can be produced from this part. So after Palo, space and alto, these strings can be generated from here. Even this space and then capital letter C and then again capital letter A, this cannot be produced from here because we have only one unit. Sir, I have a confusion there. So, and the syntax we have highlight in this after small braces, why there is star sign? Not understanding your point. For Here example, these before the small space. letters. Yes, sir. After small letters, these stars. This space can be generated from this part. This capital letter can be generated from this part, and this part can only produce all possible strings with lower letters, which means LTO, but there is a parenthesis over it.
So I Yes, can sir. produce strings from this whole part in concatenation of these three parts, which means the strings which would be generated from this highlighted part will contain first space, then capital letter, and then lower letters, multiple letters. Single letter is also possible. Now do For the your sake of now do your question again. आप Yes, उर्दू में sir. भी बात कर दें, आप उर्दू में भी यानी कि समझा दें उसको. सर ये इसकी तो समझ आ गई, कैपिटल का भी, और ये स्मॉल लेटर्स समझ आ गए। ये स्मॉल ब्रैकेट के बाद टैरिक लगा है, मैं चाह रही हूँ ये किस काम के लिए लगाया गया? ये वाला स्टार, ये यस सर, दैट यस मीन्स, वाला। हाँ, इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये एक स्ट्रिंग आल्टो आप नहीं, इसके अलावा अगर इसके बाद और भी होती, अभी तो इसके अंदर एक दो तीन है, अगर इसके अंदर 7 होती, 8 होती, तो वो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी भी आप इससे प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन ये सी ए नहीं कर सकते. दिस सी ए could not be produced from this expression because this capital letter C and then again A. For example, I can produce space from this part, C from this part, and epsilon from this part. Okay, then space C can be produced. But here this star means, okay, in first iteration I can produce space C. In second iteration I can again produce space, some capital letter, and then some lowercase strings. Here star means basically iterations. First iteration is 0 and you can get your string. Second iteration and then you can get some string. Third iteration and then you can get some string. So in my first iteration, I can produce this space and alto. Space, capital A from here, LTO from here. I can get this space alto string in first iteration using this expression. If there is another word like this capture after this alto, then I can again produce this space from this part, and I don't have a capital letter in this part, so this cannot be produced. So then your string will be rejected. But if I have, uh, by the way, we will study these things in detail again in when we will start these topics properly, but have a look over here. अगर मेरे पास ये alt, if after alto, if I have another string like like, okay, like Malta, I cannot write it properly. This is small l, by the way. This is not the capital L. Are you seeing this word which I have just written here, mole? yes, sir. यस Okay. सर। If this word mole is present here after alto with space, now you're this part, now you're this part with outer steric. This part will give us tendency to produce this space alto first, and then in second iteration we can produce this space mole word with this part because there is a star over it. We can repeat it according to our needs. So in first iteration, we can produce space alto. In second iteration, space,
capital M from this part, OL from this part. And we can generate space mole after this alto word using this part because steric is available, which means you can repeat this whole part how many times according to your need. For example, if I want to repeat it 100 times, you can repeat. If you want to repeat it 1 lakh time, you can repeat. So it's up to you. This is star. When you are given with a star, then it means all possible strings, everything is possible according to that alphabet set. Or in other means, you can repeat that expression according to your wishes. So you can generate all the strings. And the last, so now it's clear or not? Yes, सर sir. Yes, Yes, sir, हो सर गया. एक दफा लगा है तो ये इसकी दूसरी दफा इक्वेशन होगी पहली एक आल्टो के लिए दूसरी दफा अगर कोई आ जाता है हमारा इसी तरह कहीं तो मोल इस तरह आपने लिया है अगर स्टेरिक बढ़ा दिए जाए तो हाँ, अगर यहाँ पे if you place steric in every portion, then you are basically giving this option that you can repeat. If we have a star over this space, then it means you can produce this space more than one time. If there is star over it, then it means you can produce capital letters more than one time. We ये will वाला we will see these understandings again in next lectures when we will start properly from the regular expressions. ओके सर As far as this example is concerned, if you have the proper understanding, then it's okay. But if you want to learn some extra concept, leave it for that next or for that future topic that we will start. But if you have some misunderstanding in specific in this example, then you can ask the question. Sir, I have a question. We can also produce PA and LO from this string. Second So we expression, don't have to write, yes. We don't have to write the first expression. how you can produce this palo word from this second part? No, you cannot produce because there is no starting space here. Here space is compulsory, but we don't Yes, have a sir. space in the beginning. I got it. So that's why palo cannot be produced from the second part. Okay. हमने जो सी है इसके लिए स्टेरिक यूज की लास्ट पर भी तो जिस ये आल्टो ये स्टेरिक लगाकर हम के एक से ज्यादा जो है वो लोअर केस में आ सकते हैं तो सी के सी जो कैपिटल था तो इसको यूज करके हम स्टेरिक नहीं थे लगा सकते वो ये लगाने को कैपिटल तो लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं उधर नहीं जा रहा. ठीक है, अगर ये हम फिजिकल क्लास में होते तो ये बातें वहां पे बड़ा मजा करती हैं. ठीक है, लेकिन हम नहीं हैं उसमें फिजिकल क्लास और यहाँ मुझे लिखने में बहुत मुश्किल पेश आती है. मैं अगर इंशाल्लाह अगर ये अलाउ कर देते ना घर में बैठने पे तो मेरे पास एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड था, मैं वो उसके ऊपर शुरू हो जाता. लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं वो रखूंगा. अभी मैं इधर बैठा हूँ दूसरे ऑफिस में, तो यहाँ पे ये चीजें नहीं है मेरे पास. तो ये बातें आएंगी, आप फिक्र ना करें. आगे हम रेगुलर एक्सप्रेशन प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे. ये सेकंड लेक्चर इज only on this topic, and then you will see a lot of examples, not only one example. Then we will see maybe 7 8 or more than 10 examples. Yes. ओके So first look at the last part. So this last part is generating only this space and capital CA, and there is no static over any part. And this first part is generating space, second part is generating only single capital letter, third part is again producing single capital letter. So this space from this part, this C from this part, this A from this part should end
two-letter state code. So this last part of the regular expression is producing this space and CA. And everything in it, this CA and Palo is from this part, CA is from this part. And if we have alto one string or more than one string, alo, mol, malta, or whatever, all those strings would be generated from this part. If those strings are following this structure, there is space, then capital letter, then lower letters, then those strings would be produced from this part. If they have some different things, then those strings would not be generated from this part. Now you can do your questions. Any student who want to ask something? I have a question. Yes, please. सर जो हमारा लास्ट पार्ट है, क्या हम उसके लिए भी उस पैरेंथेसिस में क्लोज करके चार यहाँ जो है वो लिख सकते हैं? फॉर अगर आप एग्जांपल अगर इधर सी अगर पीए होता फॉर एग्जांपल, तो हम उसके कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि यहाँ भी पैरेंथेसिस लगा के ऊपर स्टार यूज करें, आप ये कह रहे हैं? यस सर। तो अगर आप यहाँ पैरेंथेसिस लगा देंगे, ऊपर स्टार लगा देंगे, तो इसका मतलब है ये एंड पे जो स्ट्रिंग आ रही है, स्पेस और कैपिटल, दो कैपिटल लेटर्स अगर एक से ज्यादा दफा आ जाते हैं तो आप इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेस CA और आगे आ गया स्पेस MA, फिर आगे आ गया स्पेस US, तो वो फिर सारे इससे प्रोड्यूस किए जा सकेंगे। ओके। हाँ, लेकिन हमने तो ये रोका है इसको, रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह इस स्ट्रिंग के मुताबिक बना के इसको रोका है ताकि इससे ज्यादा आगे पीछे ना जाए। एंड में ये हो और शुरू में ये, ताकि ये एक किस्म का प्रोग्राम है जो आपने इसके अंदर कोड कर दिया है, हमने रोक दिया इसको। अगर आप स्टार लगा देंगे तो पता नहीं क्या क्या होता जाएगा। यानी हमने सिर्फ रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से जितनी हमें रिक्वायरमेंट हमने उतनी इंसर्ट करनी है। ओके सर, थैंक यू सर। बिल्कुल रिक्वायरमेंट के लिहाज से। और कोई पूछ लो, मीडियम चेंज हो गया इंस्ट्रक्शन का? ये जो आपने स्टैक लगाया पैरेंथेसिस के बाद, इसको अभी तो सिर्फ आल्ट प्रिंट करवाना है? नहीं बेटा, बात ये कट गई है अब आप, यानी कि साउंड ये स्टैरिक में आप कह रहे हैं जो यहाँ पे मैंने लगाना था कोई पैरेंथेसिस? नहीं, जो दरमियान आपने लगाई नहीं है, लगी ये पैरेंथेसिस। हाँ, जो लगा हुआ है स्टैरिक, अगर एक हटा दें क्योंकि हमने सिर्फ आल्ट प्रिंट करवाना है, वो एक ये जो अब आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो थोड़े से ना इररेलेवेंट है। अब आप इसको हटा दें जरा, थोड़ी देर इसको हटा देते हैं जी। आप समझ लें कि यहाँ पे स्टार नहीं है तो क्या होगा, ये सिर्फ एक दफा स्ट्रिंग जनरेट होगी, ये वाली चल जाएगी सही, इस स्ट्रिंग के लिए बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये वाली इसके लिए बिल्कुल ठीक है। पालो भी इससे आ जाएगा, आल्टो इससे आ जाएगा, CA इससे आ जाएगा, इसके लिए ये बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन अगर यहाँ एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स हैं तो उसके लिए फिर नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं आप स्टार को हटा दें, इस स्ट्रिंग के लिए ये बिल्कुल ठीक है। सर मैं यही, थैंक यू। अच्छा, ये मेरी ये जो लैपटॉप है इसकी बैटरी जो है ना ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। आपका टाइम भी हो गया वैसे, टाइम खत्म हो। चलो फिर आगे हम शुरू करेंगे ये फॉर्मल प्रूफ से इंशाल्लाह, ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज ही कर सवाल आ जाए। हाँ, लड़के तो यही कहते हैं बस अल्लाह हाफिज, और अभी बीच में होता है तो फिर कह रहे होते हैं खत्म कर दो पहले ही, आधा घंटा पहले बता दो। और फिर जब सर अब हम हर स्टैरिक तो नहीं ना डालते बेटा, ये अगर वो सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है, अगर दूसरे जो फीमेल स्टूडेंट्स है अगर वो क्वेश्चन कर रही हैं तो इसका मतलब है कि वो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी लोग या तो आपको समझ आ चुकी है या फिर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। समझ आ गई। चलें, ठीक है, पहली ठीक दफा है, ही आ गई। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर।